Assalamu alaikum everyone and Pakhair Raglet. This is Fahad and I hope you're all doing well. This is a comparison video of the top 3 budget earbuds that I believe offer great value for money. All three have different price categories starting from 3,500 rupees up to 6,550 Pakistani rupees. Now before diving into the video, if you're new to the channel, तो channel को subscribe करना मत भूलिएगा. Let's get into it. Audionic S680 मैंने 3,500 पाकिस्तानी रुपीस के परचेज किए थे from Audionic's website. Realme Buds T110 मैंने 5300 में एक्सेसरीज हब की वेबसाइट से परचेज किए थे एंड साउंडपीट्स क्लियर मैंने soundpeats.pk से 6550 पाकिस्तानी रुपीस के अलॉन्ग विद डिलीवरी चार्जेस ऑर्डर किए थे. I'll skip the unboxing of these earbuds because इनकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी मैं इनके इंडिविजुअल रिव्यूज़ में कर चुका हूँ जो कि आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे. Let's directly jump into the most important category, that is sound. साउंड को मैंने डिफरेंट पोर्शंस में ब्रेक डाउन करके इन ईयरबड्स को कंपेयर किया एंड फॉर दिस कंपैरिजन मैंने इनको Xiaomi 14T Pro के साथ कनेक्ट करके इनकी टेस्टिंग की. Realme Buds T110 में आपको 10 मिलीमीटर का ड्राइवर मिलता है whereas Soundpeats Clear में 12 मिलीमीटर का ड्राइवर है एंड Audionic S680 में 13 मिलीमीटर का ड्राइवर मिलता है. I'll start with the Realme Buds T110. Believe it or not, despite having the smallest driver size of 10 millimeters out of these three earbuds, the Realme Buds T110 turned out to be the loudest. इनका साउंड फुल वॉल्यूम पर काफ़ी लाउड रहा ड्यूरिंग माई टेस्टिंग एंड फुल वॉल्यूम पर इनका साउंड डिटेल्स को काफ़ी हद तक मेंटेन रख पाता है विदाउट एनी मेजर डिस्टॉर्शन. कमिंग टू दी Audionic S680, इनकी लाउडनेस भी काफ़ी लाउड है फुल वॉल्यूम पर एंड ऑडियो की डिटेल्स को इवन फुल वॉल्यूम पर ये काफ़ी हद तक मेंटेन रख पाते हैं विदाउट डिस्टॉर्टिंग दी ऑडियो. The Soundpeats Clear, on other hand, is very comparable to the S680 in terms of loudness on full volume level. The Soundpeats Clear also doesn't distort the sound on full volume and preserves the details. But one thing is worth noting that on 65% volume, the Audionic S680 and the Soundpeats Clear have the same loudness level, whereas the Realme Buds T110 have similar loudness on just 45% volume, but loudness का ये gap full volume पर आकर काफ़ी कम हो जाता है. However, Realme Buds T110 full volume पर around 10% loud है compared to the S680 and the Soundpeats Clear, but I'm sure 95% of the consumers won't use them on full volume anyways. It is also worth noting that the Realme and the Soundpeats do have their companion apps, whereas the Audionic does not have any app support. So Realme and Soundpeats के full volume को आप इनके ऐप से to some extent मज़ीद boost कर सकते हैं from the equalizer settings. बेस की अगर बात करें तो Realme Buds T110 are not specifically bass-centric earbuds. Instead, they are more on a balanced side. But they do pack a punch of deep bass whenever it's required. T110 का bass to treble ratio 60-40 है with 60 bass and 40 treble. They have fairly decent instrumental separation. And vocals are fine and neat. Overall, इनका sound इनके price को justify करता है. The Audionic S680 on the other hand is more on a bassy side. S680 का साउंड काफ़ी सॉलिड है एंड बेस टू ट्रेबल रेशियो 60-40 है विद 60 बेस एंड 40 ट्रेबल. वोकल क्लैरिटी इनकी काफ़ी प्रोनाउंस्ड है एंड इनके साउंड में किसी टाइप का कॉम्प्रोमाइज़ फील नहीं होगा इफ़ यू टेक देयर प्राइस इनटू कंसिडरेशन. यूजुअली ऑडियोनिक के ईयरबड्स काफ़ी थके हुए साउंड करते हैं बट इनका ये मॉडल साउंड में काफ़ी सॉलिड है. साउंडपीट्स क्लियर काफ़ी बैलेंस साउंडिंग ईयरबड्स हैं व्हेन इट कम्स टू बेस एंड साउंड ट्यूनिंग. इनका बेस काफ़ी बैलेंस्ड एंड बेस टू ट्रेबल रेशियो इनका 55-45 है विद 55 बेस एंड 45 ट्रेबल. इनका साउंड वोकल्स को बहुत क्रिस्प डिलीवर करता है एंड अगर आप इनको थॉरली ऑब्जर्व करें तो ये ऑडियो फाइल्स के उन माइक्रो डिटेल्स को भी डिकोड करता है जो यूजुअली हम इग्नोर करते हैं या जिनकी हमें समझ नहीं पड़ती. इन तीनों के माइक्स को मैंने टर्न बाय टर्न सिम कॉलिंग पे फ़ोन के माइक के साथ कंपेयर किया है टू गिव यू एन आइडिया अबाउट देयर कॉल क्वालिटी ऑन सिम कॉलिंग. इस वक्त आई एम आउटडोर्स इन अ सॉर्ट ऑफ नॉइजी इन्वायरमेंट एंड टू इंक्रीज द नॉइज लेवल्स आई विल टर्न ऑन द एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड. और इसके बाद जब आप फोन के माइक्रोफोन से बात करते हैं तो फोन का माइक्रोफोन कुछ इस तरह से आपको आउटपुट देता है इन अ नॉइजी इन्वायरमेंट. एंड नाउ आई विल बी स्विचिंग ओवर टू द Audionic S680. Now I switch to the Audionic S680 and Audionic S680 को switch करने के बाद कुछ इस तरह से माइक की क्वालिटी आपको मिलती है S680 की. एंड इसके बाद I switch to the Realme Buds T110.
Now I've switched to the Realme Buds T110. So Realme Buds T110 पे switch करने के बाद माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको मिलती है in a sort of noisy environment. And now I'll switch to the soundpeats earbuds. Now I'll switch to the soundpeats earbuds. तो switch करने के बाद soundpeats earbuds की माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको सुनने को मिलेगी in a simulated and a bit naturally noisy environment. कॉलिंग परफॉर्मेंस सरप्राइजिंगली S680 की अच्छी रही, टेकिंग नंबर वन स्पॉट। उसके बाद Realme T110 took the second spot, and लास्ट में Soundpeats clear third position secure करता है, which is a bummer. They all have their own low latency mode for gaming. मैंने इनको PUBG पे gaming mode on के साथ टेस्ट किया, and I hope these gaming clips will give you a better comparative analysis. But remember, फ़ोन का Bluetooth हार्डवेयर भी latency को impact करता है, and I tested them with Xiaomi 14T Pro, which is a flagship category phone, so आपका experience मुझसे different हो सकता है based on the device you're using. As far as gaming performance goes, the Soundpeats Clear provided the least latency in my opinion. And उसके बाद Realme T110 की performance अच्छी रही gaming में, and last में S680 की. Starting with the S680, S680 के buds की battery capacity 40 mAh per earbud है, and case 500 mAh का है. Based on my previous testing, case 0 to 100 1 hour and 48 minutes में charge हो जाता है. बस का प्ले टाइम 6 आवर्स एडवर्टाइज हुआ है ऑन 70% वॉल्यूम, बट मैंने इनको अराउंड 85% वॉल्यूम पे जब टेस्ट किया था, सो आई गॉट प्ले टाइम ऑफ 6 आवर्स एंड 30 मिनट्स, विच इज़ मोर देन द एडवर्टाइज प्ले टाइम. एनी हाउ, Realme Buds T110 के बड्स की बैटरी कैपेसिटी 40 mAh पर ईयरबड है, वेयरएज केस की बैटरी 460 mAh है. T110 का एडवर्टाइज प्ले टाइम 7 आवर्स है, बट ड्यूरिंग माई टेस्टिंग मुझे इनसे ऑन अराउंड 80 to 85% वॉल्यूम पे 6 आवर्स एंड 23 मिनट्स का प्ले टाइम देखने को मिला था, which is slightly less than the advertised playtime of 7 hours. Soundpeats Clear की बैटरी परफॉर्मेंस काफ़ी अंडरवेलमिंग रही. Initially इनका playtime 5 hours and 45 minutes का मिला था, which wasn't really impressive, so I tested them again specifically for this video. But again, I only managed to get a playtime of 5 hours and 25 minutes on 85% volume, जो कि almost 1 hour and 35 minutes कम है इनके 7 hours of advertised playtime से. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में.